Assalamualaikum, dear all students of class 5. This is your teacher, Miss Daniel, and I hope you all will be fine and safe at your homes. As you all know, we have done simple present, affirmative, negative and interrogative in our previous session, and we have also done past simple, affirmative, negative and interrogative. So students, in this session we are going to study future simple, affirmative, negative and interrogative. फ्यूचर सिंपल हम कहते हैं वो काम या वो वक्त जो होने वाला है, आने वाला है, जो काम होगा. जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर सिंपल बाय गा, गी और गे. हम किस तरीके से पहचान करेंगे फ्यूचर सिंपल की? फ्यूचर सिंपल के जुमलों की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू में हम उसकी आइडेंटिफाई उसको करेंगे गा, गी और गे से. हमेशा फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंसेस, जुमले जो होंगे वो ख़त्म हो रहे होंगे गा, गी और गे पे. जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूं. अली कल स्कूल जाएगा. हम बाग में खेलेंगे. वो कल स्कूल नहीं आएगी. ये तमाम सेंटेंसेस जो थे वो हमारे फ्यूचर सिंपल के थे. आप लोग ये बात गौर कर सकते हैं कि ये तमाम जुमले जो हैं वो किस पे ख़त्म हुए थे? गा, गी और गे पे. जैसे कि अली कल स्कूल जाएगा, ये हमें इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर सिंपल को. हम बाग में खेलेंगे, गे से ये ख़त्म हो रहा है तो ये भी इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर सिंपल को. वो कल स्कूल नहीं जाएगी, गी जो है ये भी इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर सिंपल को. फ्यूचर सिंपल वो होता है जो काम हमारा फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो है वो सरअंजाम होगा, मतलब वो काम किया जाएगा, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर सिंपल. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल. यू कैन सी हियर द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल इज सब्जेक्ट प्लस will plus first form of verb plus object. Here we will use will, and in future simple we always use first form of verb. You have to remember this. In future simple affirmative structure we use first form of verb. Now here you all can see an example of affirmative sentence of future simple in which I have written Ali will come to school. Ali is our subject here. Ali will. Then we have used come, which is the first form of verb. Ali will come to school, and the school is our object. Ali will come to school. Ali kal school aayega. It is the indication of the future simple. Now students, I am moving towards the negative structure of future simple. As you all know, negative means no or not. In negative sentences, we always use not. So the structure of the negative future simple is subject plus will plus not plus first form of verb plus object. You all can see the negative structure of future simple, which is subject plus will plus not plus first form of verb plus object. We always use first form of verb in future simple, and in the negative structure we will use subject plus will not plus first form of verb plus object. Now students, here you all can see the example of negative structure, which is Ali will not come to school. Here our subject is Ali. Ali is our subject here. Ali will plus not come. Come is the first form. Ali will not come to school. अली कल स्कूल नहीं आएगा. You all can understand this. This is the indication of the future time.
अली कल स्कूल नहीं आएगा. अली will not come to school. Now students, I am moving towards the interrogative structure of future simple. Here you all can see the interrogative structure, which is will plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. इंट्रोगेटिव, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो जुमले होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में सवाल कर रहे होते हैं. इंट्रोगेटिव का मतलब है किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी काम के बारे में, होने वाले काम के बारे में जो है हम सवाल करें. जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी. क्या अली स्कूल जाएगा? क्या वो बाग में खेलेंगे? क्या हम कल सैर को जाएंगे? These all are the examples of future simple interrogative. Interrogative means asking questions, जिसमें हम किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी काम के बारे में सवाल कर रहे हो, वो कहलाता है हमारा इंट्रोगेटिव. और इस स्ट्रक्चर में हम जो है अपना हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमारा विल, हम इसको सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं. जैसे कि हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है, तो हमने इसको सबसे स्टार्ट में लिख दिया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये सवालिया जुमला है, इस वजह से वी विल पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ आवर सेंटेंसेस. So students, here you all can see the structure of interrogative. Will plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. Now students, here you all can see an example of interrogative structure. Will Ali come to school? क्या अली स्कूल आएगा? Will plus Ali, which is our subject. Will Ali come is the first form. Will Ali come to school? School is our object and question mark. क्या अली स्कूल आएगा? Will Ali come to school? Here you all can see an example of interrogative sentence of future simple, which is indicating the future time. Will Ali come to school? क्या अली स्कूल आएगा? ये एक्शन वो है कि वो एक्शन है जो कि हमारे आने वाले वक्त में सर अंजाम होगा, जो हमारे आने वाले वक्त में एक्शन डन होगा. क्या अली स्कूल आएगा? Will Ali come to school? Now students, I am moving towards the exercise of this, in which number 1, वो अपना काम मुकम्मल करेगी. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इंडिकेट हो रहा है ये भी फ्यूचर टाइम को ही इंडिकेट कर रहा है. वो अपना काम मुकम्मल करेगी. नाउ द अफर्मेटिव, शी विल complete her work. वो अपना काम मुकम्मल करेगी. She will complete her work. Now negative means इनकारिया जुमला, जिसमें किसी भी बात से इनकार हो रहा हो. She will not complete her work. वो अपना काम मुकम्मल नहीं करेगी. She will not complete her work. Now interrogative, as you all know, interrogative means asking question, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, किसी भी एक्शन के बारे में सवाल किया जा रहा हो. तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या वो अपना काम मुकम्मल करेगी? Will she complete her work? क्या वो अपना काम मुकम्मल करेगी?
Will she complete her work? Question mark. So students, here you all can see number 1, वो अपना काम मुकम्मल करेगी. Affirmative, she will complete her work. Negative, she will not complete her work. वो अपना काम मुकम्मल नहीं करेगी. And the interrogative is, will she complete her work? क्या वो अपना काम मुकम्मल करेगी? Now students, I am moving towards the number 2. Ali क्रिकेट खेलेगा. अली क्रिकेट खेलेगा. अली will play cricket. As you all know, we always use first form of verb in future simple. Ali will play cricket. Now, negative, Ali will not play cricket. Ali will not play cricket. Ali cricket नहीं खेलेगा. Now interrogative, will Ali play cricket? क्या अली क्रिकेट खेलेगा? Question mark. Will Ali play cricket? Now students, you all can see Ali cricket खेलेगा and the affirmative is Ali will play cricket. Negative, Ali will not play cricket. And the interrogative is, will Ali play cricket? Question mark. Now students, number 3, हम बाजार जाएंगे. हम बाजार जाएंगे. We will go to market. हम बाजार जाएंगे. It is the affirmative sentence of future simple. Now negative, we will not go to market. हम बाजार नहीं जाएंगे. We will not go to market. Now the interrogative, will we go to market? Will we go to market? क्या हम बाजार जाएंगे? Question mark. Number 3, हम बाजार जाएंगे and the affirmative is, we will go to market. Negative, we will not go to market. हम बाजार नहीं जाएंगे. And the interrogative, क्या हम बाजार जाएंगे? Will we go to market? Question mark. Now students, number 4, अम्मी खाना बनाएंगी. अम्मी खाना बनाएंगी. Affirmative, mother will cook food. अम्मी खाना बनाएंगी. Mother will cook food. Negative, mother will not cook food. अम्मी खाना नहीं बनाएंगी. Mother will not cook food. Interrogative, will mother cook food? क्या अम्मी खाना बनाएंगी? Will mother cook food? Question mark. So student number 4 is अम्मी खाना बनाएंगी. Affirmative is, mother will cook food. Now the negative, mother will not cook food. And the interrogative
Going towards the number 5. हम पिकनिक पर जाएंगे. हम पिकनिक पर जाएंगे. Affirmative. We will go on picnic. हम पिकनिक पर जाएंगे. We will go on picnic. Now, negative. We will not go on picnic. हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे. We will not go on picnic. Now the interrogative. Will we go on picnic? Question mark. क्या हम पिकनिक पर जाएंगे? Will we go on picnic? हम पिकनिक पर जाएंगे. Affirmative. We will go on picnic. Negative. We will not go on picnic. And the interrogative is will we go on picnic? Question mark. So students, here we have completed this exercise. You all have to do this in your copies by heading future simple, affirmative, negative and interrogative. Now, I hope you all have understood this and you will write this in your copies very neat and clean. Now the time of the today's session has been ended here. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.